Hello kids, welcome to Unacademy. I hope you all can see me. Just give me a second so that I can connect with you on the YouTubes so that I know you all are there and you can hear me properly. So everyone, welcome to Unacademy. So today we are coming up live for you guys because we got a lot of information and a lot of queries like why don't you come up with trigonometry. So here I am coming up with the topic which is the most difficult found among the kids that you're not able to solve some of the questions of trigonometry. So I'm here to solve those questions for you. I hope you all can see me live now. Just give me a second. Let me go through it. Yeah, am I live for you all? Yes, I am. All right, guys, welcome to Unacademy. So today we would be starting trigonometry for class grade 10th, and all the 90s don't feel that you are out of the place. Nahi, 10th में भी यही पढ़ना ही है. Trigonometry is there in 9th as well. So 9th की revision and 10th का थोड़ा extra learn कर लेंगे तो my 9th की और अच्छी practice हो जाएगी, isn't it? So all the ICSE students who are in 10th grade, this is for you. I would be trying to make the trigonometry really very easy. सारे फॉर्मूलेज हम क्लास के अंदर ही लर्न कर लेंगे इसी 1 आवर में और तभी वी विल बी एबल टू एस योर एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी. येस, वी वांट यू ऑल टू एस योर एग्जामिनेशन. द टर्म 2 इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. उसकी तैयारी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई होगी, राइट, इजंट इट? येस, टर्म 2 इज जस्ट अबाउट टू इन द कॉर्नर. इट विल बी स्टार्टिंग इन अप्रैल. वी ऑल गॉट द न्यूज़ फॉर दैट. और अब उसकी तैयारी के लिए वी हार्डली हैव टाइम. सो हमें जल्दी से सारा रिविजन करनी है विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, विद लॉट ऑफ energy and with lot of positivity. I hope term 1 result was very good for you. If not, then not a problem. उसको भी अच्छे नंबर लाने हैं तो term 2 में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली term 1 का रिजल्ट भी बेटर हो जाएगा. Isn't it, guys? All right, so let us start. Before starting, let me tell you who am I. I am Harneet Kaur Gujral. I'm a mathematics educator at Unacademy, and I have done my mathematics honors from Delhi University. I have been teaching you guys from last 10 years, so I have the experience. I know कौन सा topic मुश्किल है, कौन से topic के कौन से questions में error आते हैं, and all that stuff. All right, so that will give you an help from my side कि मैं पहले ही बता सकती हूँ क्लास में कि ये वाला error करोगे, we know it. So better be careful. So that time you can write a note that this is an error, or you can make a circle that this are the errors that can be committed by us. और last time पे आप बस वो errors वाले जो important questions हैं उसको go through करोगे and the revision is sorted. Alright, so here we go. We are starting the topic. What are we going to study today? We are going to study trigonometric identities. So what is trigonometric identities? What is trigonometry? Where do we use trigonometry? So first of all, a question for you all. Do you know what is trigonometry and where do we use it? Yes, everyone who's present online who wanted me to teach trigonometry. कईयों ने मैसेज किया था YouTube पे, मैम trigonometry कब स्टार्ट कर रहे हो, मैम trigonometry प्लीज स्टार्ट कर दो. So here I am with all you guys कि trigonometry के easily कैसे formulas learn करने हैं, how to do it quickly. और उससे पहले before starting a topic, you should know the question that why are you studying this topic और इसकी application क्या है. Any one of you who knows that why are we studying this topic and where do we apply it? All right, so let me tell you trigonometry itself. So trigonometry stands for two things: triangles and measurement of triangles. All right, so we'll talk that in detail. So what is trigonometry? Where do we apply it? But as a real life example, if I want to tell you that if there is a hot air balloon, all right, at this location, okay, or maybe a kite when you are seeing it. अगर एक बच्चा है small, उसने kite देखा है और hot air balloon देखा है, he is saying that it is here. And from this much distance and from this point, यहाँ पे boy पहले stand हुआ था. Alright. Then later he realized that he wants to go and run to his mom and tell her that ऐसा एक hot air balloon मैंने देखा है. आओ मैं आपको दिखाऊं. आप बाहर आओ, मैंने आपको दिखाना है. अब hot air balloon तो वहीं नहीं रहेगा, right? It will move towards some other extent, something like this, और दूर हो जाएगा. Right? Now this is the height which has been maybe more, maybe less, and the distance has also been increased. So height भी बढ़ गई, distance भी बढ़ गई, right? अब अगर पूछा जाए कि आपसे इसने कितना distance travel किया, how will you be able to tell that कितना distance travel किया is the first question. All right. Second question is कि यहाँ से जो boy का vision है, जो boy देख रहा है, वो किस angle पे देख रहा है, वो vision है. और ये हमेशा 90 डिग्री हो क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो ये कितना लंबा है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू. Yes, I am going according to the reduced syllabus. Of course, I am. So whatever is being asked, whatever will be coming in term 2, we are doing that preparation. So first of all, we have table term 2 पे concentrate कर रहे हैं. All right, guys?
ओके सो इससे हमें पता चल जाएगा कि टिग्नोमेट्री एक्चुअली एप्लीकेबल कहाँ होती है. तो अगर मेरे को ये बेस जो है डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, मुझे ये हाइट चाहिए तो कैसे करूँगी, ये एंगल चाहिए तो कैसे करूँगी. और अगर मैं इंक्लिनेशन की बात करूँ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसके अंदर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं. तो इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये टिग्नोमेट्री इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर ट्रायंगल मेजरमेंट. जो ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना, उसके एंगल को मेजर करना, this stands for trigonometry. Alright, so before starting and going ahead, let me tell you the Unacademy is available as Telegram as well. So वहाँ पर अभी मैं 1 hour के लिए अवेलेबल हूँ. आपके मैं सारे डाउट्स जितने भी 1 hour में इस टॉपिक से रिलेटेड है मैं आपके सॉल्व कर सकती हूँ. बट मे बी अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया था, राइट? यू हैव सम अदर डाउट्स दैट यू वांट टू आस्क लेटर ऑन. सो फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद अस एट टेलीग्राम. सो वहाँ पे टीचर्स आपके लिए लाइव प्रेजेंट होती हैं, ऑलमोस्ट होल डे के लिए कनेक्टेड रहती हैं. जब उनको फ्री टाइम मिलता है, जब आपको फ्री टाइम मिला, यू कैन जस्ट पोस्ट अ क्वेश्चन दैट यू हैव दीज डाउट्स एंड व्हेनेवर दे आर फ्री फॉर दैट डे दे विल बी देयर टू आंसर योर डाउट्स. ऑलराइट, सो इससे आप टीचर्स के साथ और कनेक्ट हो सकते हो. दे कैन गिव यू द अपडेट कि हमारा व्हाट्सएप पे कब आने, like on Telegram, that when are they coming live on YouTube, कौन सा topic आने वाला है, and everything. So you are mean connected and you have all the information there as well. But doesn't that mean that you forget to subscribe to the YouTube channel? It is really very important for you to subscribe to the YouTube channel and press on the bell icon. All right, bell icon पे जब तक press नहीं करोगे तब तक notification नहीं आएगा. तो maybe you guys are already 10 minutes late, but we haven't started much, so that's okay. But even if you were late for 10 minutes and we have already started, so maybe you don't know the basics of it and then you're not able to understand the concept. अगर basics अच्छे से नहीं आएगा तो आगे concept के लिए बहुत सारी problem होगी. So it's remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you get notification. आपको notification पहले ही आ जाएगी कि ऐसे ऐसे class होने वाली है and you have to be there. So we are just targeting 1,000 subscribers. I hope you can help and let us achieve that target by helping your friends around and telling them to come and join Unacademy and revise with us. Term 2 revision with Unacademy. Isn't it great? With a lot of practice questions. All right, so here you go. That's what I was telling you. Topic pe trigonometry stands for Tigro and Metron. So trigonometry means triangle measurement. So Tigro itself means triangle and metron symmetron and that means measurement. So triangle की measurement करने को trigonometry कहते हैं. How do we measure sides of the triangle? जिस angle पे है. तो generally trigonometry is represented with a right angle triangle जिसके अंदर angle of inclination पूछते हैं या ये angle पूछते हैं, ये angle किस angle पे बन रहा है, and the one of the angle is 90 degree of course, क्योंकि हमें height चाहिए, हमें base चाहिए और वो right angle में होता है. Right angle में we also know that if this is a base, this is the height and this is a slant height, right? And you know what's the Pythagoras theorem? Anyone who knows what's a Pythagoras theorem, and if a square नहीं लगाना, you can put a triangle. I understand what's a Pythagoras theorem you want to tell me. So अगर इसमें Pythagoras theorem refer करती हूँ तो क्या होता है? What is a Pythagoras theorem? Everyone, have you learned Pythagoras theorem? I hope you know it because triangle में, right angle triangle में, that's very very important to know the sides. So do you know what is Pythagoras theorem? Yes, all right. So can you tell me what's the formula to calculate or what is the Pythagoras theorem formula by which we are able to find out the measurement of the sides of a right angle triangle? All right, Shaurya. Great. So hypotenuse square, where here it is a Latin. This lateral side square is equals to height square plus base square, right? In this case, I can write it P and I can write it H for making you all very easy that what we are talking about. So that becomes hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. This is perpendicular. Perpendicular means the side which makes 90 angle with the base, all right? इस चीज़ के अंदर this is angle of theta that we are talking about with respect to angle A. This is perpendicular, this is base and this is side. But irrespective to angle C, the base changes, the perpendicular changes, the hypotenuse still remains the same. Alright, let's see how ये हम पूरे चैप्टर में आज पढ़ेंगे कि कैसे एंगल A के लिए perpendicular different है, बेस अलग है, और एंगल C के लिए कैसे different है. और इसी टाइप के क्वेश्चन जब स्कूल में पूछे जाते हैं, जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो we get confused कि मैंने तो मैम यही perpendicular तो यही है, बेस तो यही है, but it's not like that. Alright, so I'll let you know how to do it. Alright, not a problem. Take care, captains, and be well soon so that you are able to prepare yourself and just relax. Don't take tension right now. Alright, you can go back, take a relaxation, and whenever you're fine, you can go back to the video. Alright, so let's do that. The sides of the opposite sides, hypotenuse, and adjacent sides of an angle refers to the angle theta such that, what do we know? What is the angle theta in this?
This is the base, this is the perpendicular, and this is the adjacent side. Adjacent side is also known as the base itself. Okay, तो base को adjacent side भी बोलते हैं क्योंकि perpendicular or the opposite side of the angle is also known as this. अब कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? सो लेट मी इरेज इट एंड लेट यू नो कि हमें कैसे ये चीज़ करनी ज़रूरी है एंड वाई आर बी राइटिंग दीज टर्मिनोलॉजीज. हम ये वाले एरर्स क्यों लिख रहे हैं, ये वाले टर्म्स क्यों लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेस एंड परपेंडिकुलर. हम दूसरे एडजेसेंट साइड्स और ऑपोजिट साइड्स क्यों कर रहे हैं? सी, जब भी हमारा जो एंगल होता है, जो थीटा जिसको हमने कैलकुलेट करना है, जैसे अभी हम बात करेंगे कॉस्ट एंड जो भी हमारे एंगल्स होते हैं, एंड बिफोर डूइंग दैट दिस इज थीटा. तो जो एंगल होता है उसका जो ऑपोजिट साइड है, opposite of this is opposite side which is known as perpendicular. तो opposite side को perpendicular बोलते हैं. alright, तो अगर उसके साथ जिसमें बेस और एंगल बन रहा है और जिसमें 90 डिग्री टुगेदर है उसको हम बोलते हैं adjacent side. alright, and 90 डिग्री के opposite side को बोलते हैं hypotenuse side. alright, this is how you are able to understand. कैसे करना है? जो थीटा एंगल है उसके जो opposite होगा वो बन जाएगा हमारा perpendicular. 90 डिग्री और जो एंगल है उसके जो ऑपोजिट है वो हमारा बनता है हाइपोटेन्यूज, एंड जो इन दोनों के बीच में जो एडजेसेंट बन जाता है वो होता है एडजेसेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं बेस. आई होप नाउ इट्स क्लियर गाइज. यस, इज इट इजी? तो इस तरीके से आप करोगे तो आपके कभी भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में एरर नहीं आएगा. दैट इज परफेक्ट. ऑलराइट, दैट इज फॉर श्योर. ऑलराइट, हाय योग, गुड आफ्टरनून. So the concept of perpendicular base and hypotenuse is in right angle triangle. हमेशा ये right angle triangle के अंदर ही बात करते हैं क्योंकि अगर हाइट लेनी है तो सीधी लेंगे, राइट? अगर कोई भी चीज़ की हाइट लेनी है तो हम डायरेक्टली स्ट्रेट लेंगे. ऐसे तो हाइट हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, राइट? We all know it. Hi Chetna. So we always do it perpendicular. Glad to see you here today as well at the exact time which is required. Great job. Alright, so moving on. तो हम इसके बाद जब बात करते हैं तो opposite side और acute angle की ही बात क्यों कर रहे हैं? Why are we saying that the opposite side is a acute angle? Acute angle क्यों? क्योंकि अगर एक 90 degree angle है right angle में, we know the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. सारे एंगल्स क्या है? 180 डिग्री. 180 डिग्री में से अगर एक 90 डिग्री हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे सम का सम भी 90 डिग्री होगा. तो ऑटोमेटिकली वो कौन से बन जाएंगे? हमारे एक्यूट एंगल. सो दिस इज व्हाई दे आर सेइंग कि जो ऑपोजिट एक्यूट एंगल होता है और राइट एंगल के जो ऑपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. ऑलराइट, सो एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट है राइट एंगल में उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि हमारे उस लाइन के पास होता है. ऑलराइट, मूविंग अहेड, दिस इज परपेंडिकुलर. बेस की बात करते हैं तो जब हमारा एंगल थीटा जो होता है जिस एंगल पे बन रहा है, जिस साइड पे बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेस, एंड राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज. दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस सो फार. So everyone, now you know कि angle के opposite is a perpendicular, 90 angle के opposite is a hypotenuse, and the base in which angle and hypotenuse are together जिसमें वो angle बन रहा है. Alright? Moving ahead, what do we have next for you guys? अब वेरियस नोटेशन ऑफ एंगल्स. अभी जब हमने बात किया था मैंने इसको थीटा लिखा था. आप कहीं देखोगे तो आपको ये वाली नोटिफिकेशन मिलेगी, कभी ये मिलेगी. ऑलराइट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस हैं, और ये सारी नोटेशंस जो होती हैं वो ग्रीक लेटर्स होते हैं, जो हमने ग्रीक लेटर्स से लिए हैं, जिसको हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू डू इट. जो हम अभी तक जो भी करते हैं वो थीटा के बारे में बात करते हैं. ये होता है फाई. Alright, this option that we are talking about, we call it phi. तो आपको कहीं पे थीटा के अलावा phi भी दिख सकता है. So don't say कि ये out of syllabus है, ये वाला तो हमने कभी करा ही नहीं. It just represent normal degree of angle, जिसके अंदर हमें उसका एंगल का मेजरमेंट नहीं पता, but that's true for all the angles. उसको हम बात डिस्कस करेंगे आगे. Alright, then we got alpha, we got beta, we got gamma. Alright, so these are the five जो हम generally use करते हैं: alpha, beta, gamma, phi and theta. Alright, so everyone clear with this? So अगर आपको ये वाले सिम्बल्स मिलेंगे तो डोंट फील कि आउट ऑफ द प्लेस है, क्योंकि ये वाले सिंगल सिम्बल्स भी आ सकते हैं. डिपेंड करता है टाइपिंग में किसको कौन सा बेटर चूज करता है. सो दे कैन यूज दीज सिम्बल्स एज वेल फॉर रिप्रेजेंटिंग एंगल्स. ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है. ऑलराइट, मूविंग अहेड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशियो का मतलब क्या होता है? Everyone, we all know what is the ratio. Very good, Yug. It's clear then. Great. Thanks for staying tuned. And I'll give you the news in the end as well. So we have quizzes in the end, lot of multi-choice questions where you need to give the answers quickly and we'll able to understand that are we getting the right answers or not. So we have a quiz in the end. So everyone, you can participate and revise the things. All right. So let's revise the concept and do some more practice. अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री तो पता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स,
और रेशियो पता है हम किसी भी टू चीज़ की जब रेशियोज लेते हैं 1/the other, राइट, उसको हम रेशियो में डिफाइन करते हैं. अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेशियोज को हम उन पेयर्स को जिसके अंदर हम लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल को हम मेजर करते हैं, वी कॉल इट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एंड नाउ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑफ 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं. एक होता है sin, एक होता है कोसाइन, एक होता है tangent, cotangent, secant and cosecant. Secant, okay. So how do we write it? इतना हर बार अगर मैं बोलूँ secant, cosecant, tangent, cotangent, तो it becomes a little more difficult, right? Sine cosine A plus cosine A. So what I'm talking about, I'm putting lot of stress. तो उस चीज़ को हमने reduce करने के लिए what we have done, हमने sine को sin sin, cosine को cos, tangent को tan, cotangent को cot, secant को sec और cosecant को cosec. Alright, this is how we have just named it easily. Like हर किसी के small nicknames होते हैं, right? To make things easy, हम हर किसी का big with surname नहीं call करते, अपने friends को भी हम ऐसे call नहीं करते. Similarly, for trigonometric ratios, we have made a small names that makes it little easy to read the question and understand what we are trying to ask us. Alright guys, so right now I hope everyone knows, because this is a revision time for you all guys. जिनको नहीं पता वो proper में से सीख सकते हैं, but who all doesn't know and who all know can give me the answers as well, okay? If I talk about sine, right angle triangle ABC, an acute angle is A. So when I'm talking about sine A का क्या मतलब है? Sine A represents मतलब ratio in terms of two sides ratio. अगर मैं cos A की बात करूँ तो mean the same thing कि two types of ratio के लिए. Alright? Yes, simplicity is the key. That's right. Alright. So sine A को मैं कौन से दो साइड से रिप्रेजेंट करूँ? cos A को कौन से दो साइड से रिप्रेजेंट करूँ? tan A को कौन से दो साइड से रिप्रेजेंट करूँ? Alright. So this is how we will be representing the things in the form of two sides. Alright. How do we do it? Let's see that. अगर simple सी बात है, कितने तरह के ratios बन सकते हैं? First of all, let's write those ratios. Okay. एक हो सकता है hypotenuse upon में base, एक hypotenuse upon में perpendicular, एक base upon में perpendicular, एक base upon में hypotenuse. Another one perpendicular upon में base and perpendicular upon में hypotenuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हो गए, right? यही 6 combinations हैं. Alright, very good. That's right. So अब इसके अंदर क्या होता है? When we know it that these are the only combinations that are happening. अब इन combinations को हमने name दे दिया. We give some name to something, we give another name to something. Alright? So अब किस चीज़ को कौन सा name देंगे? That is what is important. Alright? So what we said, perpendicular, base, perpendicular. Alright? Perpendicular, base, perpendicular, hypotenuse, hypotenuse and base. This is what is sine, cos and tan. Alright? Yes, this is for the 10th grade, but for the 9th grade as well, this concept is there. So ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ directly 10th grade का high level करा रही हूँ. Right now we are just doing with the basics. So आपको 9th के लिए भी काफ़ी help होगा ये. So this is really very important. This is just the base. Alright? Now, perpendicular upon में hypotenuse represents the sine A. Hypotenuse upon में perpendicular is cosec. So हम वो cosec के बारे में बाद में discuss करेंगे. Let's talk about only sine. So जब perpendicular और hypotenuse की relation के बारे में बात करते हैं, it will represent of sine. Sine के मामले में opposite ऐसे जाना होता है. This represents sine. Alright? So sine A is perpendicular upon में hypotenuse. Now moving on to when we talk about cos के अंदर हमारा चीज़ change हो जाती है. Let me change the color to let you know क्या हो रहा है. When I'm talking about cos के अंदर he says कि first I'll stick to base and then I'll run towards the hypotenuse. Angle वैसे ही बन रहा है. डायरेक्शन वही है. द फर्स्ट वन सेज मैं पहले परपेंडिकुलर पे जाऊंगा फिर हाइपोटेन्यूज पे जाऊंगा. कॉस कहता है मैं बेस पे जाके हाइपोटेन्यूज पे जाऊंगा. बात करते हैं टैन की. टैन कह रहे हैं मुझे हाइपोटेन्यूज पे जाना ही नहीं है. व्हाई डजंट द टैन गो? बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट दैट मे बी यू गाइज नो बिकॉज यू आर इन 10th grade. द साइन tan A is cos A upon sin A upon cos A. Right? So sine is perpendicular upon hypotenuse, whole upon base upon hypotenuse. In that case, perpendicular upon hypotenuse into hypotenuse upon base, and this gets cancelled. We are left with perpendicular upon my base. So this is another logic to understand. Alright? कि हमारा sine tan का automatically perpendicular upon my base कैसे आता है?
ऑलराइट. अब सिंपल एक चीज़ है, अगर आपको साइन और कॉस आते हैं आपको बाकी सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. आपको टैन को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोसेक को सेक को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है. ओनली यू नीड टू नो इज दिस डायरेक्शन ऑफ साइन, perpendicular की तरफ and then moving to hypotenuse at the bottom, the ratio. Cos first goes to the base क्योंकि C and B are together. So C हमेशा पहले B पे जाता है फिर H पे जाता है. Simple as that. This is how you can learn the things. Alright? अब tan का हमने ऑटोमेटिकली डेरिवेशन सीख ही लिया. अगर मेरे को साइन पता है, कॉस पता है, तो tan ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट. बट अगर आपको लगता है कि मेरे को डिराइव करना ईजी लगता है तो यू कैन यूज द डेरिवेशन मेथड और आप उस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो. आप साइन की वैल्यू निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकालो, टैन की ऑटोमेटिकली आप फॉर्मूले में डाल के सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऑलराइट. बट इफ यू थिंक कि मेरे को डायरेक्टली करना है एंड आई एम मोर बेटर इन लर्निंग द थिंग्स और मैं शॉर्टकट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वो अलग मैटर है. फिर आपको लर्न करने का तरीका एंड लर्निंग हाउ टू डू इट और जो शॉर्टकट बिहाइंड इट दैट विल आई विल ऑल्सो टीच यू कि आप उसको कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे उस पर शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो. ऑलराइट. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव ऑन स्लाइड्स. स्लाइड के अंदर जब तक हमने अभी तक पढ़ा है कि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोसेक इज द ऑपोजिट ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ रेशियोज. ऑलराइट. साइन ए का उल्टा होता है कोसेक. सो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आता है. All time best, good afternoon. So I hope everyone you're enjoying today's class and you're learning a lot of things, right? Remember to subscribe to the channel, press on the bell icon so that you get the notification beforehand कि मैं आने वाली हूँ और आप ये सारी बेसिक चीज़ें मुझसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. एंड इससे आपको मैथ्स की फंडामेंटल चीज़ें भी नॉलेज होंगी कि हम ये पढ़ी क्यों रहे हैं और क्यों करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि आप रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो. Alright, so these basic things which are not really answered by all the teachers or maybe your doubts which are the real thing कि हम पढ़ी क्यों रहे हैं. Generally, I was when small मेरे पास बहुत डाउट होता था कि मैं पढ़ी क्यों रही हूँ, especially related to history. So I hope anyone who of you who think that history को लेके ऐसा डाउट है तो I am on the same track कि हम पढ़ी क्यों रहे हैं. But mathematics when I realized कि it is so related, it's so interesting, so उसके बाद आपका इंटरेस्ट बन जाता है सब्जेक्ट में and you start learning itself. Alright. Very good, you agree. Your cos is opposite of sec and cot is also opposite of tan. All right. So that's right. So when we talk about cos, we get the another thing which is sec, that is opposite of cos, that is hypotenuse will come on the top, base will go in. So हमने ये भी कहा था cos हमेशा पहले base पे जाता है फिर hypotenuse पे जाता है, तो base upon hypotenuse. All right. Clear, guys? Now moving on to tan, we know tan is opposite of cot is opposite of tan and tan is also known as जो भी हमने discuss करा था sin A upon में cos A. Cot can be written as cos A upon में sin A. So this is also a way from which you will be able to directly calculate cot value. Alright, so I hope everyone it's clear कि हमें कैसे perpendicular upon में base मिल गया और हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं. हम ये सब A के बारे में बात कर रहे हैं. Remember that अगर मैंने suppose बोला sin C निकालो, then here the values will be different. It will not be same because अब इस angle के बारे में बात हो रही है. Let me be different pen so that you guys understand properly what am I talking about. Yes. अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर स्मॉल p ये है, बेस ये है एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम. Alright, so in that case when we are talking about sin A, the values are different. The value is like p upon में b, which represent here like base जो इस फिगर में upon में perpendicular. When I'm talking about sin C, रिमेंबर दैट. ओके, तो ये जो एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक्यूट एंगल ए के बारे में बात हो रही है, तब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है. बट अगर इसी ग्राफ के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि ये वाली वैल्यू 5 है, ये 6 है, मे बी दिस इज 7, तो अब वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 5/6. गॉट इट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइन ए द वैल्यू इज 6/5. आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? Alright, so moving ahead to the next one, we know the reciprocal. What is opposite? What is different? एक की उल्टा. Like if I say sin A, is equal to 1 upon cosec A. Cos A is equals to 1 upon में
sec A. You can do the other way around. Cosec is 1 upon sine, sec is 1 upon cos, tan is 1 upon cot is 1 upon my tan. So simple as that. It's just the reciprocal of it. It's just the opposite of it. And in that case, we are able to find out the values. All right, so this is what you need to tell me now. Everyone, we are talking about angle C. Now, can you see that opposite side perpendicular is different? Now, this becomes the base, but still hypotenuse remains just the same. The slant right remains exactly the same. All right, so everyone, I want to know the value of this, that what will be sine C for this one. Perpendicular upon my base, right? So now perpendiculars are different. Now, how to learn those things? All right, so so Yog has a question that, ma'am, if sine 2 minus 1 is cos 2, then, ma'am, can tan 2 minus 1 be cot 2? Can it be, ma'am? All right, so for this, what you need to do is substitute the values of tan as sine as cos, sine upon cos, and substitute the value of cot as cos upon sine. All right, whenever you put that tan square minus 1, and remember cos square minus 1, so it will be sine square minus cos square upon me cos square. Now, when you know it, sine square minus cos square, minus 1 is cos square. That becomes 1 over cos square. So that way you will be able to get the answer or not. You can substitute the value and let you know. All right. So let's see how to do the tricks of trigonometric ratios. Trigonometric ratios की trick कैसे करते हैं? You need to have, some people have. So sine is perpendicular upon my hypotenuse. I've told you the diagram, जिससे बहुत easily learn हो जाता है. But still, if you want, you can use this. So some people have curly brown hair. So curly stands for cos, brown stands for base, H stands for hypotenuse. Some people have curly brown hair, turn permanently brown. So turn permanently black. So what happening is, some people have curly brown hair which turn permanently black. So बच्चे जब born होते हैं तो उनके थोड़े brown hair होते हैं, but normally वो black after all black में convert हो जाते हैं. So by this trick you would be able to learn the sine, cos and tan as well. So just learn 3 lines. Some people have curly brown hair, turn permanently black. All right, so I hope this will help you to learn this. What is the ratios? How to find out? This represents sine. This represents perpendicular, this represents hypotenuse, isn't it? So this is how you can have cos, base and hypotenuse, tan, perpendicular and base. All right, so this is how you would be able to learn the ratios with a trick. All right, now we know cot is the opposite of tan, so we don't need to learn the notification for that. That becomes directly opposite. Cosec is opposite of sine. We know it, so we don't need to learn that. All right, so thank you, Yog. I hope you like the tricks. So yes, we are in this classes. I generally give a lot of tricks. अभी भी आपको जो next कैसे learn करना है, कैसे tricks करनी है. There are a lot of tricks which will be coming up the whole session. It's not like we have finished it. So right now I want the values from you all. So I need, what's the value of sine A? Everyone, it's a time for quiz. Let's see how many of you are able to give the answers. I can see a lot of kids right now live. See guys, अगर आपने आंसर गलत भी दिया, that does not make a difference to me. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर गलत है. The thing which is important is कि आप participate कर रहे हो. Alright, so in case if your answer is wrong but you are participating, your name would be written on the screen as a shootout. मैं हमेशा इनमें shootout देती हूँ अपने बच्चों को, जो whatever my kids are who are learning with me, और उनको कि आपने सीख रहे हो. Maybe it's wrong, so that does not make a difference for me. Alright, so everyone, I want you to participate right away and let me know what is sine A. What is the value of sine A? What's the value of cos A? What's the value of cosec C? Cos C, cosec C. So first of all, we are talking about A. Then we talk about C. All right, so remember when we are talking about what is perpendicular, what is base, what is hypotenuse, and now the triangle is little tilted. So what would be the base? What would be the hypotenuse? All right, BC upon AC. Sine A is 12 upon 13 BC. All right, so how did you calculate BC? You said BC is 12. How did you calculate that BC is 12? BC 12 कैसे है? By applying which of the formula that you applied? All right, so that's the right answer. But how do you know what is BC? BC upon AC, I need the value. Let's see. How are you able to calculate BC? Yes, guys, everyone, you all can participate. I want responses from each and everyone present here. Yes.
Pythagoras, very good. Shaurya, very good. Sarneet, where that's right. Pythagoras theorem is the right answer, and right now this is the base. When I'm talking about with the reference of A, this becomes the base, this becomes the perpendicular because इसके opposite वाला perpendicular है, and this is the hypotenuse. And जहाँ पे angle और 90 degree होता है, both side base है. Don't say that 13 is a base. Remember that 13 base नहीं है. Alright, so angle और ये base बन जाएगा. This is perpendicular, and this can be calculated by Pythagoras theorem. So what does that mean? Pythagoras theorem means 13 square is equals to p square plus 5 square. Right? So p square is equals to 169 minus 25. So p square stands for 144. So P stands for 12. That's right answer, guys. So PC is 12. That's the right answer. Moving ahead, what's the value of sine A, cos C and cosec C? I think everyone is now giving the answers. They all know it, how to solve it. So let's see what's the right answer. Sine A is 12 by 13. That's the right answer. And cos C is 12 by 13. Cosec is 12 by 5. Cosec is opposite of sine. Then, alright, so let's move to cosec C, which we haven't got right. Now let's move and find out the value of first sine C. Sine C stands for perpendicular upon hypotenuse. तो पहले तो हम जाएंगे perpendicular पे. इस side का perpendicular क्या है? 5. Upon my hypotenuse is B, that is 5, and upon me is 3. So that gives you the answer 13 by 5. Alright, so 13 by 5 is the right answer. There's an error here. Alright guys, that's the right answer all time best that you gave the right answer. Very good. Sorry for writing it on the top. That answer was wrong. Moving ahead to the next question that says, let's see how many of you are able to find out the value of sec A minus tan A. कैसे निकाल सकते हैं? Sin A, 13 sin A is 12. 13 sin A is 12. That means sin A is, it's indirectly हमें बताया हुआ है कि sin A 12 by 13 है. हमें निकालना है sec A और tan A. So how will we able to find out? First of all guys, हमारे को जब sin A बताया हुआ है तो I know sin A is perpendicular upon hypotenuse. Isn't it? पहले perpendicular then hypotenuse. That gives me that perpendicular is 12x. Hypotenuse is 13x, right? क्योंकि ये ratio के बारे में बात हो रही है. In that case, what I'm trying to do it, I'm finding the values in terms of x, क्योंकि कुछ ना कुछ एक common terminology होगी. So if I know, that means 13x square is equals to 12x square plus base square, right? That gives me 13x square, value is 169 minus 144x square is equals to b square. So that gives me 25 x square is equals to b square. So b's value is 5x, right? This is how we got the value of b, that is base is 5x. Now sec stands for, what is the value of sec? 1 upon opposite of sine, isn't it? The sine x, the sec x is opposite of sine, and tan we know is sine upon cos. So now, or otherwise, we know the value of sine as well. We know the value of tan in terms of curl permanently black, right? Turns permanently black. So we know it is perpendicular upon my base. And this we know is perpendicular upon my base. Sine stands for the opposite of it. That means hypotenuse upon my perpendicular. So now we can put the value, hypotenuse is 13x upon perpendicular, that is 12x. Minus perpendicular, that is 12x upon my 5x, right? So x and x gets cancelled. We left with 13 by 12 minus 12 by 5. All right. So now I hope you all can solve this equation and you would be able to get the answer. So let's see what's the right answer. Everyone present here, are you guys understanding? समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? हमने इनको x के टर्म में क्यों लिया? Why are we taking in terms of x? Is because we know that it's a ratio. But ऐसा है कि finally आंसर ये आ रहा है. It can be 24, जब हम 12 को multiply कर रहे हैं 2 से. 24 upon 13 times 2. That gives me, the answer is 36. तो मेरे पास ratio की terminology कुछ इस term में थी. तो इधर x क्या वैल्यू हो जाएगी? 2. So that is how we will be able to get.
Yes, I would be teaching the plus 10th plus classes as well. So this is program is just going to start. So all the guys who want to learn with me in the term 2 with the plus course, you can subscribe yourself. Download the application app. There we have special classes as well. We have a lot of teachers coming up with different subjects for you guys to learn preparation of term 2. You all can enroll yourself there, and the plus special classes are absolutely free. We are not charging. This absolutely free for all the kids which are present there who are downloading the Unacademy application. तो आप उसको डाउनलोड करके आप वो वाली क्लासेस फ्रीली ऑफ कोर्स देख सकते हो. प्लस क्लासेस में व्हेन यू आर कनेक्टेड विद इट, प्रॉपर प्रिपरेशन, सेकंड टर्म की प्रॉपर तैयारी विद लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेरीज, हर टाइम के लिए यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन प्लस कोर्सेज. एंड फॉर दैट वी हैव 10% डिस्काउंट फॉर यू गाइज. यू कैन यूज माई प्रमोशनल कोड फ्रॉम विच यू विल गेट डायरेक्टली 10% डिस्काउंट बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद मी यूट्यूब, और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ऑफर तो लाना ही है फॉर माई यूट्यूब किड्स. सो येस, दैट प्रमोशनल कोड you can use it and you can get 10% discount. All right, so what the value of sine A? We got the value of it as 1 by 5. So इसकी value हमारे पास आ रही है 1 by 5. All right, I have no idea what you're talking about. Which batch is it? I have no idea. I'm so sorry for that. So let me go and check that out and let you come back to you and let you know. All right. So I hope now knowing perpendicular base and hypotenuse, you would be able to find out the value. Simple uski value substitute karni hai, and that's easy. All right. Moving on to the next question where we all. All right. So let's see what is the right answer for this. In a triangle ABC, AP is perpendicular to BC. All right. So AP. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता ना गाइज, जस्ट मेक इट दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू, एक राइट एंगल ही है, ऑटोमेटिकली इट्स अ ट्राइंगल दे आर सेइंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज फॉर श्योर. परपेंडिकुलर बोल दिया, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. All right, so what it's saying is AP is perpendicular to BC. In that case, let's make it like this. AP is perpendicular to BC. All right, now what does it say? Now BC is the value is given to me, cot B value is given to me, cot C value is given to me in terms of this, cot C value is given to me. I need to find the length of AP. मतलब indirectly क्या कह रहा है यहाँ पे, perpendicular निकालने को कह रहा है. I know this whole side, अब इस पूरे की 112 सेंटीमीटर मुझे पता ही हुई है. Alright, so now what you have to do is you need to find out the value of length of AP. Let's see how many of you can do that. Cot B की बारे में जब बात हो रही है तो cot B, cot represent as cos B upon sin B. One thing. Otherwise, I also know जो मैंने ट्रिक याद करी थी, tan is turns permanently black. So cot की वैल्यू हो जाएगी cot B की base upon में perpendicular. Base upon में perpendicular is 4 by 5. That gives me 4x, 5x, right? अब जब इसकी cot B की बारे में बात हो रही है तो बेस इसका बन गया, ये हो गया 4x, and perpendicular here becomes 5x. Isn't it? ये भी तक तो clear है guys? Is it easy enough? Alright, so now we know cot B is base upon perpendicular. This is 4x and that is 5x. Moving ahead to the different colors so that हम cot C के बारे में कुछ समझ सकें. Alright, so now moving ahead to cot C. Cot C की भी तो वैल्यू यही होगी ना, base upon perpendicular. ये cot C है, तो cot C की वैल्यू in terms दी हुई है 12 by 5. So let it be 12y upon में 5y, because now the ratio can be different as well. Not sure कि x and y same है या नहीं. Alright, in this case this becomes as 12y and this is automatically 5y. अब 5x is equals to 5y, तो ऑटोमेटिकली x is equals to y. यहाँ से हम प्रूव करवा रहे हैं कि रेशियो जो है वो x is equals to y. That is why this becomes 12x. Alright, now 5x, ये ऑटोमेटिकली 5x is equals to 5y. That means 5 times of x इसकी वैल्यू है. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4x plus 12x is equals to 112, क्योंकि पूरा बेस जो है ऑटोमेटिकली, ये डिस्टेंस 4x है, ये डिस्टेंस 12x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा. इन दिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स 12x अपॉन में 5x. नाउ यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x. जो x की वैल्यू आएगी यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड यू गेट द वैल्यू इट एज AP as 30. Let's see, is that the right answer? No, AP's value is 35.
Just go ahead and check it. All right, so just check that. How are you getting it? AP value should be 35. Yes, that's right. Very good, guys. AP's value is 35. That's the right answer. So I hope now it's easy. सी गाइज, जब भी कोई चीज़ होती है हमेशा डायग्राम हमारे बहुत हेल्प करता है. सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, व्हाई आर वी डूइंग इट, कैसे हम बना रहे हैं. अब इसमें ए बी सी इज अ ट्रायंगल बोला था, राइट एंगल नहीं बना था, तभी वो हमारा ऑलमोस्ट इक्विलैटरल की तरह या हमारा या आइसोट्रीज की तरह बना सकते हो. इट्स डज नॉट डिपेंड, क्योंकि हमारे को साइड्स के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं पता कि वो इक्वल है या नहीं. Alright, moving ahead to the next. Before that, let me tell you the news that I was going to tell you, that Unacademy subscription feature is there. You can come there live from the comfort of your house. आपको unlimited access मिलेगा for all the courses. ऐसे नहीं कि मैथ्स के लिए मेरे साथ enroll कर रहे हो तो सिर्फ मैथ्स मिलेगा, नहीं. यहाँ पे साइंस की टीचर्स भी हैं जहाँ पे आपको टीच करेंगी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. आप वो सारा कुछ चेक कर सकते हो. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, आंसरिंग राइटिंग सेशंस होगा कि आप आंसर्स को कैसे लिखते हो, कौन से स्टेप वाइज. जैसे मैं कह रही थी कि हमने एक्स लेना जरूरी है, आप डायरेक्टली ले लोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं गलत होगा, बट वो आंसर सही नहीं होगा बिकॉज रेशियो इंपॉर्टेंट है. सो दीज माइनर थिंग्स जो हम ऑटोमेटिकली नहीं समझते, कि हमें लगता है यार इसके बिना ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नीड दिस, इट्स फाइन. सो इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर. ऑलराइट, so just revise and find out the value. The answer is 35. Just do the calculation. Just एक बार दोबारा check कर लो and then you will be able to do it. And you have study material in the form of PDF as well. So जो भी हम study material यहाँ पे कर रहे हैं, जोन सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका PDF फॉर्मेट भी आपको मिलता है. तो एंड टाइम पे एक ब्रशिंग के लिए जस्ट पूरी टेक्स्ट बुक, अगर मैं आपको पूरी बुक दूँ कि उसको रिवाइज कर लो, दैट्स डिफिकल्ट. या जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसको रिवाइज कर लो, दैट्स डिफिकल्ट, राइट. सो फॉर दैट यू कैन जस्ट टर्न अराउंड पेजेस ऑफ द PDF that you are giving it, that are the important questions of what are the important topics जो learn करने हैं. ये formulas जो होते हैं उनको कैसे beautifully आप learn कर सकते हो with the easiest trick of all. आप देख रहे हो जब भी मैं use कर रही हूँ मैं वो चीज़ दोबारा बोल रही हूँ. Some people have curly brown hair, turn permanently black. तो इससे क्या कर रही हूँ, I am not learning the formula. मैंने एक phrase learn कर लिया और मैं हमेशा वो phrase को revise करती हूँ, साथ साथ मेरे phrase भी revision हो रहे हैं, मेरे formulas automatically confirm हो रहे हैं, and I know I will not make any error in that. Alright, so this is how you can learn different techniques with us and you can learn कि कैसे formulas learn करना easy है. And guys, अगर आपको expansion के formulas में problem होती है, you can go and check my video out. I've already done the identities के ऊपर videos कि कैसे एक formula से आप 8 formulas derive कर सकते हो. आपको learn करने की ज़रूरत ही नहीं है. It's so easy for you. So the things to make easy for our kids is that motive कि आपके लिए हर चीज़ बहुत easily हो जाए और आपको एक चीज़ समझ आ जाए तो automatically सब कुछ हो जाए. Alright? So for that, if you want to subscribe for the plus subscription, you will get 10% discount and you can use my code that says Unacademy. Just type Unacademy and you will get 10% discount. You can enroll yourself with us with lot of weekly texts, mock texts, सब कुछ होंगे. Unacademy को application को डालना है तो आप class 9, 10th, 11th, 12th subscription अपने हिसाब से plan कर सकते हो. Why am I saying 48 months का लो या 42 months का लो या कैसे लो plus subscription के लिए? The thing is कि इसके लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि पूरा 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. आई ऑल्सो नो इट. 48 मंथ्स में नहीं करना. ऑलराइट, करना 12 मंथ्स के अंदर ही था और अब हार्डली अब आप तो रिवाइज करना है 2 मंथ्स के अंदर ताकि हमारा ये वाला 10th का खत्म हो जाए एंड वी मूव टू 11th इटसेल्फ, राइट. ऐसा ही करना है. बट व्हाई एम आई सेइंग इट टू टेक 48 मंथ्स का या 42 अ बिगर प्रोग्राम इज बिकॉज वी हैव अ स्कीम फॉर यू गाइज. येस, सो नाउ इट इज अ सब्जेक्ट विच विल बी डिलीवर्ड इन हिंदी फॉर ग्रेड 9th. आप 10th में हो तो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स और ब्रदर सिस्टर्स जो 9th में हैं कि हाँ ICSE आप लोगों को भी पढ़ा रहा है. बट द ऑफर फॉर यू गाइज फॉर 9th ग्रेडीज इज कि आप 9th की पेमेंट करोगे प्लस सब्सक्रिप्शन की एंड आपको ICSE 10th, 11th, 12th एब्सोल्युटली सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. Yes, you just need to pay for subscription for one of the class and rest 3 classes subscription is absolutely free. Alright, so this is how you can revise and these are the teachers that will be teaching you in Hindi. तो ये वाली teachers आपको subject को हिंदी में पढ़ाएंगे. Right now I'm using bilingual, but यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे. If you think you're not more comfortable in English, आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आपको English थोड़ी सी hesitation है, then you can join the Hindi batch with all these teachers present there. They would be teaching you. Alright, and if we talk about English batch, then I'm there to teach you guys.
English में, if you want that subject should be taught in English for 9th, I am there. I will be present on Monday, Wednesday, Friday 4 to 5 mathematics. So इधर आप जाके Monday, Wednesday, Friday को 4 to 5 में क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की सब्सक्रिप्शन 10th, 11th, 12th की फ्री है, just paying for 9th. And Monday, Wednesday, Friday 4 to 5 you can find me there. I would be teaching it. All right, so this is what you were talking about. So I had no idea. I'm so sorry. So you know it better. So this is for English. Yeah, I would be delivering in English. So this is my team where these are the teachers. We all will be teaching you in English with all the subjects. We have maths, we have physics, we have chemistry, we have biology. All right. मूविंग अहेड नाउ टॉकिंग अबाउट इन हिंदी फॉर ग्रेड 10th आपके ये वाले सर्स होंगे मैथ्स के जो कि आपको अवेलेबल होंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे. 10th की सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 11th और 12th की सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है. दिस सर विल बी कमिंग इन मैथमेटिक्स, स्पेशली हम बात करेंगे क्योंकि हम मैथ्स की क्लास में आए तो हम सिर्फ मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो Tuesday, Thursday and Saturday it is 6:30 to 7:30. No, I'm there for 10th as well. Don't worry. ऐसा नहीं है कि मैं 9th में पढ़ा रही हूँ. You have come in 10th. I am there in 10th as well. So 10th वालों के लिए this is in the Hindi. When you talk about Tuesday, Thursday, Saturday 6:30, the sir would be there for teaching you mathematics. But अगर आपको English में maths का पढ़ना है, complete English, we would not be using this bilingual there. वहाँ पे मैं bilingual use नहीं कर सकती. यहाँ पे मैं आपके लिए कर रही हूँ. But वहाँ पे particularly सिर्फ English में conversation होगी. And then ICSE class 10th के साथ 11, 12 एब्सोल्युटली फ्री है. एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 to 5 आपको मैं वहाँ पर मिलूंगी. Alright, so there you can catch me there and study with me in the plus classes जहाँ पे हम हर एक चीज़ डिटेल में करेंगे विद सारे डाउट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से ये वाले क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले ज़रूर प्रैक्टिस करो. इसका कुछ एरर है देन वी कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम एज वेल. वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ. विद दिस यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल. येस एवरीवन, यू कैन कनेक्ट विद अस एट टेलीग्राम. वी आर लाइव देयर. सो आपको डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में लिंक दिया हुआ है. उस लिंक पे करोगे तो आपको टेलीग्राम में हम टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हो. वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने हर एक चीज़ एंड टीचर वुड बी देयर टू डायरेक्टली गिविंग यू द आंसर्स. यहाँ पे 1 hour के लिए एंड इट्स टाइम टू गो इन 10 minutes, बट वहाँ पर वी वुड बी कनेक्टिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. Isn't it? Yes. और अगर आपको ये बैचेस इंग्लिश में 11th हैं, 11th वाले बच्चों के लिए 11th की पे करोगे तो 12th फ्री है. एंड वी हैव फॉर ISC class 10th in terms of English, and in the math 12th we have it in English as well in the same batches. And now with 12th you have to teach mathematics, physics, chemistry and biology is there where you can do it. Well, for pinning it, you go to the description box of this video. इस पर पिन नहीं हो पाएगा. आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव दैट. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का. यू कैन क्लिक देयर एंड यू कैन कनेक्ट विद मी देयर फॉर श्योर. Alright, and that we were talking about कि Unacademy की फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं. सो रिमेंबर दैट Unacademy की फ्री क्लासेस भी हैं. यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टीच कर रहे हैं. Unacademy में भी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ क्लास हैं जहाँ पे आप हमारे से रियल टाइम इंटरेक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, इमोजीज भी शेयर कर सकते हो जो यहाँ भी कर सकते हैं. बट यहाँ यूट्यूब में और Unacademy के उस ऐप में क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है, यू हैव टू टाइप एवरीथिंग. ऑलराइट, आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है. बट नाउ फॉर दिस यू कैन अटैच अ इमेज. आप टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन है या आपने कहीं पे भी क्वेश्चन देखा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो. एंड इन दैट केस यू डोंट नीड टू टाइप. उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता. जितने भी आपके डाउट्स हैं आप सबके स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, आप अपलोड करो. क्लास में जब आते हो आई रीड दैट क्वेश्चन देयर इटसेल्फ. तो आपको टाइप करने में और अपने डाउट्स पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी. बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे. सो दैट्स वाई वी से दैट you can raise your hand. Yeah, there you can raise your hand as well, and I will be able to unmute you and you will be able to talk ourselves. You can ask the question properly. But यहाँ पे आप proper अगर question दिखाते हो तो it's easy for the kids as well कि वो सारे question पढ़ सकते हैं कि किस question के बारे में particularly बात कर रहे हैं. Not only this, यहाँ पे जब quizzes होती हैं then you have the question किसने पहले दिया, किसने बाद में दिया, right? So it yes, you have to take no, to talk to subscription नहीं, Telegram पे you can connect with us. That's not a problem. So we are there for YouTube kids as well. तो उसके लिए आपको subscription लेने का ज़रूरत नहीं है. Alright, so in Telegram you can connect with us directly. So poll leaderboards complete with your friends. So whenever there is a poll leaderboard, वहाँ पे आपके quizzes होते हैं जिसमें आपको पता चल सकता है कि आपने कितने सेकंड में आंसर दिया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हो. तो it's like a leaderboard there itself. यहाँ पर मुझे बताना पड़ता है yes your answer is right, you're wrong. वहाँ पे पोल और गेम्स की तरह हम खेल
खेलते हैं क्लासेस में, बहुत सारी गेम्स होती हैं क्वेश्चंस को रिलेटेड, गेम्स नहीं दूसरी गेम्स बट क्वेश्चन को रिलेटेड गेम्स होती हैं. You can solve those questions and finally win that game. All right. Now, special classes में enroll कैसे करना है? You need to download the app, click on go start, get started. अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करो, अपना फुल नंबर, ईमेल एंड रेजिडेंस. दैट्स इट. सिंपल डिटेल्स हैं, इन सबको ऐड करोगे. उसके बाद आपसे पूछेंगे व्हाट्स योर गोल फॉर प्रिपरेशन. सो जो भी आपका गोल फॉर प्रिपरेशन है उस क्लास के लिए 6 और 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, राइट नाउ यू विल क्लिक ऑन क्लास 12, 6 to 12. वहाँ पे आपको एक ICSE क्लास 10 दिख जाएगा. आई होप दी ऑल ऑन 10th. 9th भी है तो 9th वाले 9th कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन यू हैव प्रेफरेबल लैंग्वेजेस. सो आई वुड बी देयर फॉर इंग्लिश. सो इफ यू वांट टू फाइंड मी, सो यू नीड टू फाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज. हिंदी के लिए प्रॉपर हिंदी में बात होगी. और दिस लैंग्वेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इंग्लिश और हिंदी मिक्स, उसको बोलते हैं इंग्लिश. और जहाँ पे टीचर इंग्लिश में ही बात करेंगी और हिंदी में बात करेगी, तो आप वो भी प्रेफरेबल लैंग्वेज सुन के उन टीचर्स से भी सीख सकते हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सारी टीचर्स बहुत अच्छे हैं. यू कैन नोटिफाई मी, और एक नोटिफिकेशन ऑप्शन होता है नोटिफाई मी, जो आपको 10 मिनट्स पहले क्लास के बता देता है कि क्लास इज गोइंग टू बिगिन. टेक योर बुक्स देयर एंड एवरीथिंग. Yes, this is a special class. Test analysis भी अलग से हो रहे हैं क्लास 10th के. So you can do for test analysis as well, जहाँ पे आप participate कर सकते हो, टेस्ट सीख सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो. Alright, so we are hardly left with some time to understand the new concept. So here we go. We will just go directly to the questionnaire. Alright, so we have a question for you all. Just going to the questions. Just a second. We are hardly left with time. Alright, so here you go. When I say 9 sine sec square theta, alright, so these types of questions we haven't done so far, so just give me a second. So I need to go to another types of questions which we have done it. We were not able to cover this topics today, so I would not be discussing that. Let's do this question. Alright, so an acute angle and sine A is given 3/4. We have to find another trigonometric ratios identities. Alright. Alright, so that's not a problem. Maybe that error gets rectified very soon. So it would be fine. Just try to enroll yourself the next time. Maybe that works. Alright. अब हमारे को साइन की वैल्यू पता है और हमारे से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या डिस्नो रेशियोज जो भी हैं एंगल ए के रिप्रेजेंटिव, सी को तो इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा. सो जस्ट रिमेंबर जिसके बारे में बोल रहा है. एंड वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन उसको सर्कल करते रहो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे चाहिए. साइन ए के बारे में बताया हुआ है और दूसरे रेशियो ऑफ साइन एंगल ए के रिप्रेजेंट में चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में, व्हाट इज इट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? पहले परपेंडिकुलर आता है फिर हाइपोटेन्यूज. तो 3/5 दैट मीन्स 3x अपॉन में 5x. So that gives me perpendicular is 3x, hypotenuse is 5x. I need to find out the base. Base कैसे निकालेंगे? By using it. The base would be calculated by Pythagoras theorem. That's right. So hypotenuse square means 5x square is equals to 3x square plus base square. So base square is equals to 25x square minus 9x square gives us 16x square. B stands for 4x. So my पास base आ गया 4x. This is x. This is x. Right? We are able to find these values. Now everyone, I want to know what is cos A, what is tan A, what is cot A, what is sec A, what is cosec A. Everyone who is present live, this is the last question for the day. Let's see how many of you can give that, and at the end of the day we'll have a shootout. So just 3 minutes more to go. You have just 2 minutes to give me the answers and we'll just end the class. So 2 minutes to give the right answers and have your name on the screen as a shootout. Let's see how many of you can do it. Cos A is AB upon AC. Okay, cos A is base upon me hypotenuse. That's right. That is 4/5. Very good. That's right. Brilliant. That's right. So then moving on to the next one. You got the cos. Now let's look at sec A. What is sec A? Let's see how many of you can give that. Sec A. What is cosec A? Alright, so here we go, just 1 minute more and then it's time to end. Let's see how many of you can give how many answers in just 1 minute more.
Last question for you all guys for the shootout. Yes, this is the last question. इसके बाद shootout होने वाला है. Name दिखने वाले हैं screen पे for all the kids who were actively participating. So just 1 minute more to go. All right, so Neat. I hope I'm pronouncing your name right. I'm very bad at names. I'm honestly accepting it कि मैं बहुत गंदी हूँ names में. मुझे अच्छे से names नहीं pronounce करने आते. I'm so sorry and don't feel bad about it. All right. All right, so we got 3x upon 4x. You can write it x को cancel करके 3/4 as well because this is what is needed. Numbers तो हमें इसी में चाहिए. वो x हमने assume करा है तो हम आंसर जिस चीज़ को हम assume करते हैं हम आंसर उसमें ड्रॉप नहीं कर सकते. all right. Remember that ये मैथ्स की हमेशा की रूल है. Just make it a rule कि आपने का कोई चीज़ खुद एक्सेप्ट करिए कि इसको मैं इस टर्म्स को कर रहा हूँ तो जनरली यार 90% हमें उसके अंदर आंसर नहीं छोड़ना होता. 10% केसेस हैं जब उसके अंदर छोड़ सकते हैं बट 90% में हमें उसको आंसर नहीं छोड़ना. जहाँ पे भी उसको अवॉइड हो सकता है उसको कैंसिल करना है. All right. Sec for 5/4, cosec is 5/3, cot is 4/3. All right. So there are a lot of competition going on. Great guys. Everyone else who want to participate? All right. So let's see what's the right answer. Cos A is 4/5. So all of you, did you get the right answer? Tan is 3/4. All right, tan is 3/4. Both of them got the great answer. Cot is 4/3. Superb. All right, sec is 5/4. Sec is 5/4. That's right. Cosec is 5/3. Very good. Your all answers are right. Superb, guys. So now you have understood the concept. So it was a great teaching you all and being connected with you. And it's time to say goodbye. Remember to download the Unacademy app so that you can be connecting with me at this time of special classes as well. Don't forget to use my discount coupon that is 10% off writing it. By putting Unacademy, you'll able to get 10% discount. You can use this and we are available at Android and iPhone as well. So Apple phone हो, Android phone हो, Google Play पे चले जाओ, Apple Store पे चले जाओ, you would be able to get it. You can use all the features which are free. Yes, वहाँ पे बहुत सारे features हैं बच्चों के लिए जो कि free of cost है. Not everything related to subscription. Free में भी काफ़ी features इस app में where you can learn with us. You can do that. You can connect with us at Telegram. Description box में है. इस वीडियो को आप share कर सकते हो, चैनल को subscribe कर सकते हो, बेल आइकन पे click कर सकते हो. And if you like the video, you can click on the thumbs like that you like it because it gives encouragement to each and every. जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, if you like the video, आपको मज़ा आ रहा था, आपने सीखा है, remember to give a like and share it with your friends. It gives a boost to the teachers that this year coming up for you guys. और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, it gives an appreciation for them. All right. Now it's time for shoot out. Let's see. So सबसे ज़्यादा जो response आज हुआ है वो है all right. All right. So now moving on to next one that is who gave actively participated in the class. All right. And what else? There was another one who just left in the end, maybe due to some reason. Yug Singh was also present and he was also actively participating. Sorry for the gap, Yug. All right, so everyone, this was a great time. So you have subscribed for the 10th. All right, that's great. So hope to see you in the class very soon. And remember, we are together at Unacademy trying to prepare you guys for term 2. Hope you do good in term 2. You have good score and you have good marks in term 1 and you can improve. If not so good, you can improve in term 2 and end of the day your score becomes right. We will all work together and crack it. All right guys, see you in the next session. Tomorrow at 12 I'll be here present for 9th grade, so you can call your brothers or friends, let them know that if you like my teaching, I'll be there for 9th grade. They can come and join in, and day after tomorrow I'll be there for 10th again. We will be doing heights and distances, so I'm telling you beforehand, be present at 12 to learn height and distances. All right, take care guys. Bye bye.